Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new unit as we have completed the upper limb and lower limb. Now we are starting the new unit that is called as thorax. Thorax is very important because the major organs of your body, lungs and heart are present in the thoracic region. The thorax is basically the part of body that is present between the neck and the abdomen. This is the diagram of the thoracic cage or full thorax that is covering the thoracic viscera. Above to is basically the neck and below to it is the abdomen. Thorax is commonly people termed as a chest as well, but chest is more extensive than the thoracic wall and its cavity within it. Okay, so in between this thoracic cage is the thoracic cavity. Thoracic cavity and its walls have the shape of a truncated cone. Okay, we can say it that it's being narrowest superiorly with the circumference increases inferiorly and reaching its maximum height at the junction between the abdominal portion of the trunk and the chest. Okay, the thorax is basically the wall of the thoracic cavity is relatively thin, essentially as thick as its skeleton. But the thoracic skeleton takes the form of a dome bird cage. Okay, it's like a dome bird cage, and the thoracic cage is also termed as rib cage. As you have seen, there are ribs here with horizontal bars formed by ribs and costal cartilage, and they are supported by the vertical sternum. Okay, that is also termed as breastbone, and posteriorly there is a thoracic vertebrae. Okay, this thoracic cage is basically covered with anteriorly with the ribs and is their costal cartilages horizontally. Vertically there is a body of sternum or sternum full, and posteriorly there are the thoracic vertebrae. They are basically protecting all of the thoracic viscera. Okay, uh, furthermore is that the floor of the thoracic cavity is basically formed with the muscle which is present in between them is the diaphragm is very important muscle, very big muscle. This time I'm just giving you a brief review. Okay, later on you will study about the diaphragm, the viscera of the thoracic cage, and also about all the bony skeleton, but at the moment I'm just giving the brief description, not we are going in the deep discussion. Okay, so here is a muscle, very strong muscle, that is a diaphragm, and diaphragm is very important in marcation between the thoracic viscera and the abdominal viscera. Okay, above the diaphragm is basically the thoracic cavity, which covering the thoracic muscles as well as thoracic viscera, and below the diaphragm is the abdominal viscera. Okay, the thorax includes the primary organs of respiration. You know very well lungs are present in the thorax, and also the circulation cardiovascular system, as heart is a part of thoracic cavity. So the thoracic cavity is divided into three major spaces. हम इसको अपने तौर पर for the descriptive purpose के लिए हम इसको three different major spaces में करते हैं. We are making it a central compartment and two right and left cavities. Central compartment is termed as mediastinum, and on each side of mediastinum is the क्या कहते हैं right and left pleural cavities, because here the lungs are present. In between them is the mediastinum where the heart is present. Okay, the majority of the thoracic cavity is occupied by the lungs, because on both sides of mediastinum is the right and left lung, and these lungs are provide the exchange of oxygen and carbon dioxide between the air and blood. Okay, the mediastinum is basically occupied by the heart and its structures, and they involving in the conduction of air and blood to form the to and from the lungs. ठीक है, वहाँ से लेता है lungs से, और ये आपने FSC में भी पढ़ा हुआ है. ओके, ये तो मैंने सिंपल आपको बताया है कि थोरेसिक केज क्या होता है, थोरेसिक कैविटी क्या होती है. ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी बोनी स्केलेटन. ये बोनी स्केलेटन की मैं कुछ छोटा सा आपको बता देती हूँ कि दिस बोन इज टर्म्ड एज sternum, and the sternum is divided into three main parts: manubrum sterni, body of sternum, and the xiphoid process. Above it, this is small notch you can see, this is called a sternal notch. ठीक है,
on mandibular sterni is connected with the body of sternum by the small angle, here it is made, that is sternal angle. ठीक है, इसको एंगल ऑफ लुई भी कहते हैं. और दिस इज प्रेजेंट एट दी सेकेंड रिब. ये आपको नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट रिब है, ये सेकेंड रिब है. दिस इज प्रेजेंट एट दी लेवल ऑफ सेकेंड रिब or second rib and its costal cartilage. So this is mandibular sterni, this is body of sternum, and this is the xiphoid process. Okay, in between the mandibular sternum, body of sternum, and the body of sternum and the xiphoid process is the costal cartilages, or we can say there are the joints in between them, ठीक है, that are separating each other. This was sternum. Now these are the ribs. Okay, these are the ribs. Here you have seen, there it is mentioned that there are first 7 ribs are the true ribs. Why they are called as true ribs? It can be asked in the viva. Because they are attaches with the sternum with their own costal cartilages. ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 6 and 7 ribs होते हैं, ये देखिए, ये जो फर्स्ट 7 रिब्स होते हैं, दे आर टर्म्ड एज ट्रू रिब्स. वाई दे आर कॉल्ड एज ट्रू रिब? बिकॉज दे आर अटैचेस विद द सेम देयर ओन कोस्टल कार्टिलेजेस and then attached with the sternum. But the lower 8 9 10 11 12 ribs, they are basically termed as floating false ribs. ठीक है, ये ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कंबाइन विद द सेम कोस्टल कार्टिलेज एंड दिस कार्टिलेज इज अटैचेस ओवर दी स्टर्नम. ठीक है, ये सिंगल कार्टिलेज जो है उससे अटैच होते हैं और ये सब एक दूसरे की कार्टिलेजेस से अटैच होकर फिर उधर जाते हैं. ठीक है, लास्ट 11 and 12 रिब्स दे आर टर्म्ड एज फ्लोटिंग रिब्स. ये आपको नज़र आ रहे हैं जो कि अटैच ही नहीं हैं इसके साथ, क्या कहते हैं, स्टर्नम के साथ. वाई दे आर फ्लोटिंग रिब्स? बिकॉज दे फ्लोट बेसिकली, दे आर नॉट कम्प्लीटली अटैचेस ओवर दी sternum. So first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh, these ribs are termed as true ribs. 8 9 10 and 11, these ribs are the 8 9 10 are basically 3 ribs are false ribs, and then 11 and 12 these ribs are the floating ribs. यहाँ पर भी ये पीछे से आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये आगे आके नहीं अटैच हो रहा कहीं भी. ठीक है, बट दे आर कवरिंग दी, दे आर बेसिकली प्रोटेक्टिंग दी एब्डोमिनल विसराज एज वेल. ठीक है, दिस वॉज अबाउट दी बोनी स्केलेटन. आपको एक एक करके सारा रिब्स और वो बताएंगे. पोस्टरली देयर आर 12 थोरेसिक वर्टिब्रीज, जिनमें से जो है वो आपको थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन कर दी जाएंगी. दिस टाइम आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दैट द thoracic cavity is posteriorly bounded with the 12 thoracic vertebrae. Okay, and along with these are the ribs basically, which are attached posteriorly over the thoracic vertebrae. Okay, ये यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया हुआ है इसमें से लेके कि देखिए, फर्स्ट रिब इज़ वेरी स्मॉलर, second rib you can see. So first 7 ribs are attached directly to the sternum through their own costal cartilages, so they are termed as true ribs. So false ribs are 8 9 and 10. ठीक है, their cartilages are connected to the cartilage of the rib above them, and then their connection with the sternum is indirect, so because of that they are termed as false ribs. ठीक है, इसने इसमें से ये एक 8 rib बता दिया उन्होंने. फर्स्ट सेकेंड तो दोनों हैं ही ट्रू रिब्स, उसमें आ जाते हैं. ठीक है, इसमें जो है ना सेकंड कैटेगरी वो बताते हैं टिपिकल रिब्स और एटिपिकल रिब्स की. ये भी आप रखें दिमाग में. द टिपिकल रिब्स हैव आर बेसिकली द 3rd to 9 एंड एटिपिकल रिब्स आर फर्स्ट सेकंड एंड 10th and 12th. क्यों एटिपिकल होते हैं? बिकॉज द फर्स्ट रिब इज़ बेसिकली द ब्रॉडेस्ट एंड शॉर्टेस्ट होता है. ठीक है, शॉर्टेस्ट होता है, ब्रॉडेस्ट होता है. सेकंड रिब जो है वो उसकी बड़ी अबव रफ एंड सरफेस होती है. ये दो रिब्स जो हैं वो एटिपिकल रिब्स में आते हैं अलॉन्ग विद द फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि फ्लोटिंग रिब्स तो वैसे ही कनेक्टेड नहीं होते स्टर्नम के साथ, तो हम उनको भी एटिपिकल रिब्स के तौर पर लेते हैं. सो दे आर 4 एटिपिकल रिब्स, फर्स्ट सेकेंड एंड द फ्लोटिंग रिब्स. ये 11th और 12th दिखाए हुए हैं. ठीक है, जो कि आगे से जाके फ्लोटिंग रिब्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. ठीक है, जो दरमियान के रिब्स हैं दैट आर 3rd to 9, दे आर बेसिकली द टिपिकल रिब्स विच हैव द सेम फीचर्स, जिसमें से हम एक आध आपको पढ़ा देंगे और वो बाकी को भी कवर कर जाएगा.
ठीक है, दिस वॉज द thoracic skeleton that form the osteocartilaginous thoracic cage, and it protects the thoracic viscera and some of the abdominal viscera as well. ठीक है, we remember this, that this is thoracic cage is also covering some of the abdominal viscera. The thoracic skeleton is basically include of 12 pairs of rib, so they combine there 12 pairs of rib and associated costal cartilages, 12 thoracic vertebrae and their intervertebral disc, they are intersposed between them, and the sternum. ठीक है, थ्री कैटेगरीज हो गई. The ribs and costal cartilage form the largest part of the thoracic cage. Both are identified numerically from the most superior to the most inferior. Okay, so this was the skeleton of the thoracic wall. Now we can see that there are inlet and outlet. ठीक है, there is some things that which are entering in the thoracic cage and then leaving the thoracic cage. यहाँ पर इसकी और एक अच्छी डायग्राम बनी हुई है, दिखाया हुआ है इसमें, केलम से की डायग्राम है ये, इसमें प्रॉपर इन्होंने बाउंड्री बनाकर रेड कलर से बताई है कि दिस इज अ सुपीरियर thoracic aperture. You can say that while the thoracic cage provides a complete wall peripherally, it is open superiorly and inferiorly. ठीक है, it is open, and the smaller aperture is the superior aperture, and is a passageway that allows communication with the neck and the upper limb, and the larger is the inferior opening that provides a ring-like origin of the diaphragm. I have told you there is a muscle which is diaphragm, and here is the opening of the diaphragm which completely ठीक है, which is present here. Diaphragm is basically primarily control the volume internal pressure of the thoracic cage and providing the basis for the tidal respiration, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे सारा. ठीक है, at the moment you should remember that the thoracic cage provides a complete wall peripherally, but it is open superiorly and inferiorly. So superior opening is termed as superior thoracic aperture, and inferior opening is termed as inferior thoracic aperture. They are also called as inlet of thorax, and this is the outlet of thorax. लेकिन हम इसको अभी फ़िलहाल सुपीरियर thoracic aperture और inferior thoracic aperture के नाम से ही याद रखेंगे. ठीक है, the narrowest upper end of the thorax is continuous with the neck is termed as inlet of the thorax or the superior thoracic aperture. ठीक है, इसकी जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है वो है इसकी बाउंड्रीज. ठीक है, anteriorly it is bounded by the upper border of mandibular sterni. Posteriorly, on the posterior aspect, is the superior surface of body of the first thoracic vertebrae. Okay, and on each side there are first rib with its cartilages. Okay, these are the boundaries of the thoracic superior thoracic aperture. ठीक है, इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू शुड रिमेंबर व्हाट आर द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इज. ठीक है, द स्ट्रक्चर दैट आर पासिंग थ्रू द इनलेट ऑफ द thorax are the viscera, large vessels. They are also some of the smaller vessels, nerves and muscles. Okay, so viscera के अंदर ट्रेकिया भी यहीं से गुजरता है, esophagus, lungs with pleuras and the thymus. And जो large vessel है that is the brachiocephalic artery on the right side. ठीक है, right side पे brachiocephalic artery होती है, that is present along with the left common carotid artery, left subclavian artery on the left side. ठीक है, right and left brachiocephalic veins as well. Okay, and the smaller vessels में आपके पास आ जाती है right and left internal thoracic arteries, right and left superior intercostal arteries, right and left posterior intercostal veins and inferior thyroidal veins. ठीक है, ये आपकी contents that are passing through this superior aperture है. Now इसमें right and left phrenic nerve, right and left vagus nerve, right and left sympathetic trunks. There also you have to memorize these contents that are passing through the superior thoracic aperture. Muscles are the sternohyoid, sternothyroid and longus colloid. Okay, इसमें एक important चीज़ ये होती है कि there is a cervical rib, that is rib attached to the vertebrae 7. You can also see in the clinical that such a rib may exert traction over the lower trunk of the brachial plexus. यहाँ पर एक cervical rib होता है जो कि आपको upper limb में भी बताया गया है, वो आपने thorax के की clinicals के हिसाब से भी करना है. ठीक है,
So this was the superior aperture. ठीक है, तो superior aperture is bounded posteriorly by the thoracic vertebrae, first thoracic vertebrae, the body which protrudes anteriorly into the opening, okay, and laterally by the first pair of laterally or on each side, ठीक है, by the first pair of ribs and their costal cartilages. ओके एंड दी एंटीरियरली बिल्कुल सामने आपको खुद नजर आ रहा है बाय सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनिब्रम स्टर्ना स्ट्रक्चर दैट पासेस बिटवीन द thoracic cavity and the neck through the oblique kidney shape. This is kidney shape. Superior thoracic aperture include the trachea, esophagus, nerves, vessel. ठीक है, you have to memorize them. In adults, the superior thoracic aperture is approximately 6.5 centimeter anteroposteriorly and 11 centimeter transversely. ठीक है, anteroposteriorly 6.5 and sorry 6.5 anteroposteriorly and 11 centimeter transversely. Okay, the size of this opening you can see is very smaller for all of these contents. Now the second is the inferior aperture, inferior thoracic aperture. This is the anatomical it is anatomically thoracic outlet. ठीक है, anatomically हम इसे thoracic outlet कहते हैं, इसको anatomically thoracic inlet कहते हैं. Okay, now the boundaries of this. The inferior thoracic aperture is a broad end of the thorax and surrounds upper part of the abdominal viscera. ठीक है, but is separated by it by the diaphragm. Diaphragm की वजह से ये separate हो जाता है, ठीक है, लोअर पार्ट से, बट बेसिकली इट इज़ अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल विजरास को भी ये कवर करता है. इट इज़ बाउंडेड पोस्टीरियरली बाय द 12th thoracic vertebrae, द बॉडी विच प्रोट्रूड्स एंटीरियरली इनटू द ओपनिंग. ठीक है, इसकी ये 12th thoracic vertebrae इन्होंने दिखाई हुई है. पोस्टीरियरली पोस्ट्रोलैटरली बाय द 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स, जो कि फ्लोटिंग रिब्स हैं आपके पास, एंड एंट्रोलैटरली बाय जॉइंट कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ रिब्स 7, 8, 9 and 10, okay, that forming the costal margins, and anteriorly by the xiphisternal joint. ठीक है, यहाँ पे xiphisternal joint है xiphoid process और body of sternum के दरमियान. So anteriorly it is bounded by the infrasternal angle between the two costal margins. ठीक है, you can see here this is infrasternal structure. Okay, and posteriorly by the inferior surface of body of 12 thoracic vertebrae, and on each side the costal margins formed by the cartilages of 7 to 12 ribs. So the outlet is closed by a large musculotendinous partition which is the diaphragm muscle, ठीक है, which separates the thorax from the abdomen. ठीक है, ये बहुत बड़ी लैंडमार्क भी होती है. ठीक है, अब आते हैं हम the structure that is passing through the inferior thoracic aperture. It is more spacious, you can see here. It is more spacious and irregular in outline. It is also in oblique because the posterior thoracic wall is much longer than the anterior wall. By closing the inferior thoracic aperture, the diaphragm separates the thoracic and abdominal cavities almost completely. Okay, the structure passing from or to the thorax or to or from the abdomen passes through the openings that traverse the diaphragm. Diaphragm के अंदर एक different openings होती हैं, ये हम आपको बाद में भी बताएंगे. ठीक है, just as a size, the size of the thoracic cavity, its inferior extend into the boundary between the thoracic and abdominal cavities. It is often incorrectly estimated because of the discrepancy between the inferior thoracic aperture and the location of the diaphragm. ठीक है, although the diaphragm takes origin from structure that makes up the inferior thoracic aperture, the domes of the diaphragm rise to the level of fourth intercostal space. ठीक है, fourth intercostal space तक वो आते हैं, and the abdominal viscera including liver, spleen and stomach, they lie superior to the plane of the inferior thoracic aperture. Within the thoracic wall के अंदर आ जाते हैं यहाँ पर ये muscles भी. ठीक है, this was inferior thoracic aperture, and you should remember the structure that are passing through it. It is large opening, venal cable opening in the central tendon of the diaphragm. ठीक है, वो वहाँ से गुजरती, जो भी openings है diaphragm के अंदर वो allow करती different structure को. You have to memorize that there are 3 large and several small openings in the diaphragm which allow passage to the structures from the thorax to the abdomen or to the abdomen from the thorax. ठीक है, नीचे से ऊपर भी आ रही हैं, ऊपर से नीचे भी कुछ जा रही हैं. Large openings are the vena cava opening which is present in the central tendon, esophageal opening which is present in the right cross of the diaphragm, and the aortic opening that is present behind the median arcuate ligament. ये large openings हैं. ठीक है, smaller openings होती हैं जिसमें आप simply ये mention कर सकते हैं कि the smaller openings give passage to the superior epigastric artery, okay, and also the musculophrenic artery, lower 5 intercostal vessels, subcostal vessels, etc. Okay, तो ये आप इसमें mention कर सकते हैं, but you have to memorize the large openings.
ठीक है, वो आपने लाजमी बतानी है कि ये इस थोरेसिक आउटलेट सॉरी इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर पर होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ इसकी क्लिनिकल बता देती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज अ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। What is thoracic outlet syndrome? It is basically a common disorder, or we can say it is a group of disorder that are occur because of the narrowing of the superior thoracic apertures. This is anatomically termed the superior thoracic aperture, but clinically we term that is thoracic outlet. Why? Because clinicians refer to it as a thoracic outlet because all of the vessels or nerves that are passing through the thoracic cavity and they enter into the neck through this opening. So it is also termed as they are leaving the thoracic cavity and entering the root. So this is termed as thoracic outlet. क्लिनिकली हम इसको थोरेसिक आउटलेट कंसिडर करते हैं, और the syndrome that is thoracic outlet syndrome, it is called as thoracic outlet syndrome because it is a group of common disorder that causing the compression over these vessels and nerves. Okay, जो nerves पे compression आता है, यहाँ आपको पता है कि brachial plexus की भी गुजर रही होती है nerves. So this is a narrowest opening and sometimes it causes the compression over the nerves and it will causes very severe tingling and numbness and severe pain in the shoulders. ठीक है, दिस इज बेसिकली द थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम. यू ऑल शुड मेमोराइज दिस. केला में बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा. थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, बस ये मेमोराइज करना है कि दिस इज अ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्लिनिकली, और clinicians refers to it as a thoracic outlet because it's a narrowest part. So because it will cause the compression sometimes in some individuals, and some diseases causes the compression of these nerves and vessels and which are passing from the thoracic region into the root of neck, so which causes severe pain and tingling and numbness sensations in the uh, in the shoulders and hands. सो दिस इज़ थोरेसिक आउटलेट. अच्छा, छोटी सी चीज़ एक और मैं आपको बता देती हूँ कि मिडेस्टिनम क्या होता है. ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रल कंपार्टमेंट मिडेस्टिनम आ जाता है और ऑन ईच साइड राइट एंड लेफ्ट रूल आ जाता है. ठीक है, मिडेस्टिनम इज़ द मिडल space, you can term it as a middle space that is left in the thoracic cavity in between the lungs. It is most important content, its most important content is the heart. Okay, and that is covering the pericardium as well. ठीक है, the mediastinum is the median septum of the thorax between two lungs. ये एक डायग्राम है जिससे मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ कि ये फ्रंट पे देखें आप, बॉडी ऑफ स्टर्नम है, पोस्टीरियरली सारी थोरेसिक वर्टिब्रीज है, इन बिटवीन हम ये जितनी भी स्पेस कंसिडर करते हैं दैट इज टर्म्ड एज मिडेस्टिनम. ठीक है, ये भी एक डायग्राम है. ठीक है, यू कैन सी हेयर, ये है बॉडी ऑफ स्टर्नम और साथ स्टर्नम पूरा का पूरा. ठीक है, मैनिपुलम स्टर्ना है, बॉडी ऑफ स्टर्नम, ज़ीफाइड प्रोसेस, एंड पोस्टीरियरली देयर आर 12 thoracic vertebrae. In between them there is a space that is left in the thoracic cavity and this is called as mediastinum. ठीक है, ये हमने कट करके इस तरह से साइड व्यू लिया हुआ है. ठीक है, इसके अंदर अब आप देखिए, we divide this mediastinum into two parts, superior and inferior. ठीक है, superior part ये है, inferior part ये है, and this inferior part is again subdivided into anterior, middle and posterior part. Okay, so this is superior mediastinum, inferior mediastinum, and inferior mediastinum is divided into anterior mediastinum, middle mediastinum and posterior mediastinum. ठीक है, इसके ये जो पूरा mediastinum है ना, ये हम आपको बाद में पूरा पढ़ाएंगे. ये सब मैं सिर्फ ब्रीफ व्यू दे रही हूँ आपको कि लंग्स कहाँ हैं, और लंग्स के दरमियान में mediastinum है, जो कि mediastinum एक स्पेस है जिसको हम डिवाइड करते हैं दो डिफरेंट कैटेगरीज में, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, क्योंकि इसके अंदर कॉन्टेंट्स डिफरेंट है. ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज द कॉन्टेंट्स, बट एट द मोमेंट जस्ट दिस इज़ अ ब्रीफ व्यू ऑफ दैट कि यू शुड नो बट, क्योंकि बहुत जगहों पे किताबों में लिखा हुआ है इन द सुपीरियर मिडेस्टिनम, एंटीरियर मिडेस्टिनम, मिडल, पोस्टीरियर. सो यू शुड रिमेंबर कि ये क्या होता है मिडेस्टिनम और इसको किस तरह हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, सो दिस इज सुपीरियर मिडेस्टिनम, एंटीरियर मिडेस्टिनम, मिडल मिडेस्टिनम, पोस्टीरियर मिडेस्टिनम. मिडल मिडेस्टिनम के अंदर फुली हार्ट और पेरिकार्डियम आ जाता है. ठीक है, पूरा हार्ट और पेरिकार्डियम इसके अंदर आ जाता है. और जो सुपीरियर मिडेस्टिनम होता है इसके अंदर फिर डिफरेंट और जो इन्होंने बताई नहीं है वो और बहुत सारे और वेसल्स, नर्व्स, आर्टरीज और वो आपको बाद में करा दी जाएंगी. सो दिस वाज होल अबाउट द बोनी स्केलेटन.
ऑफ दी क्या कहते हैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक केज मैंने आपको कवर करवा दिया कि व्हाट इज़ बेसिकली द थोरेसिक केज, थोरेसिक कैविटी, एंड व्हाट आर द bony skeleton that is present in the thoracic wall, or we can say the skeleton of the thoracic wall. A brief view of mediastinum, what is mediastinum, and a full view of superior and inferior apertures. ये आपको ज़रूर आने चाहिए, thoracic outlet syndrome का ज़रूर पता होना चाहिए. This is very important from the viva point of view. So thank you for today.